Assalamu alaikum and welcome to Dr. Imran's official, and in today's lecture we will discuss the male reproductive organ and the main function of the male reproductive organ and the parts of the male reproductive organs. So initially, if we will discuss the function of the male reproductive organ, the main function of the male reproductive organ is to produce and transport sperms. And the second important function of the male reproductive organ is that to produce main sex hormones in male, which are called testosterones and which are the responsible main sexual character in men. So before going towards the lecture, initially I want to describe on diagram. Initially, if you look at the given diagram, you will see initially first, this is the cylindrical shape of penis from here to here. The cylindrical shape of penis is divided into three main parts. The first part, which is attached to the abdominal area, that is called the root. And the second part, in the middle part of the penis, that is called body or shaft. And in body or shaft, there are thousands of air sacs which are filled with blood, and when these blood sacs are filled with the blood, then the erection and becomes rigid. And the third part is called glans. Glans is the cone-shaped outer tip of the penis. So this is the main cylindrical shape which we have discussed right now. Now we will come to the middle part, that is the second one part. And the second one part, you will see the first hair behind the penis root, there is a pubic bone, and behind the pubic bone there is a laying a bladder, and in bladder contain urine, and behind the bladder there are seminal vesicles, and these seminal vesicles produces fructose or starch which nourish the sperms and help in mortality. And then here you're seeing that below the seminal vesicles there is a small P-shaped gland that is called prostate gland. And prostate gland play a very important role. It has two main important functions, the prostate gland. The first one important function of the prostate gland is to nourish the sperms. And the second important function of the prostate gland is to control urination. So we have discussed the second part, and in second part we have to discuss another thing that is called bulbourethral glands that are located in the male reproductive organs. These glands are also called Cooper gland because initially the anatomist Cooper discovered this gland. That's why we call this bulbourethral glands also Cooper gland. And these glands play a very important role in production of semen, and initially it secretes a sticky mucus slippery fluid that help in sexual intercourse. Now we comes on to the third and last part of the male reproductive organs. And last part of the male reproductive organs is called scrotum, which are the house of sperms, and these are the hanged below the penis. And scrotum contain testes and hundred of nerves, blood vessels, and epididymis and seminiferous tubules. So all these are available in scrotum, and scrotum important function is to protect the testes. So these are the three main parts of the main reproductive organs which we have discussed now. Now we will discuss each and every part in the individual one. And now we will discuss the scrotum. Scrotum basically are the pouch-like organs and hanged down to the penis, and they are also called the house of sperms.
and they contain testes in it, and then contain blood vessels and nerves in it, and basically they allows to contract and relax the muscles, and when they comes close to the body, they get warmth from our body, and they are get away from our body, and then they get coolness from our body to maintain the sperm temperature. So next one is the testes. Testes are two olive-like structures, and these connect the penis with the spermatic cord, and which travels the sperms through the penis, and the testes are responsible for the production of main sex hormone, which is called testosterone, and testosterones are the main sex hormones which are responsible for male sexual characters. There are seminiferous tubules in it, and these seminiferous tubules are responsible to produce sperms. And after seminiferous tubules, there is an epididymis, and epididymis is a long coiled behind the bladder, and it carries and transport sperms. So the next one is vas deferens. Vas deferens is basically is the long muscular tube behind the bladder. It transports mature sperms only. And the next one is the ejaculatory ducts. Ejaculatory ducts are responsible for the ejaculation of sperms. And after ejaculation duct, there are urethra. Urethra is a long tube that connected from the bladder, and it comes throughout the penis, and it carries urine. And when during intercourse, it stops the urine and it carries the sperms. So the last one are seminal vesicles. Seminal vesicles are just located behind your bladder, and these seminal vesicles produces rich starch-like fluid, fructose, which nourish the sperms, and that gives them to strength to move. So these are the special things that is related to the male reproductive organ. अब हम मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है इसको अगर उर्दू में डिस्क्राइब करते हैं, और उर्दू में डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले तो हम वही डायग्रामेटिक व्यू की तरफ अगर हम जाएं तो डायग्राम में आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली ये जो हमारे सामने है ये बेसिकली पेनिस का सिलेंड्रिकल पार्ट है, और सिलेंड्रिकल पार्ट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रूट, शाफ्ट एंड ग्लैंड्स। तो बेसिकली रूट कौन सा है, शाफ्ट कौन सा है और ग्लैंड्स कौन सा है। तो रूट को अगर देखा जाए तो जो पेनिस की रूट है बेसिकली ये हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है उसको उसके साथ अटैच होता है, उसको टच करता है। और जो सेकंड पार्ट इसका है दैट इज कॉल्ड बॉडी और शाफ्ट, इसको हम बॉडी और शाफ्ट कहते हैं। और ये जो मिडिल पार्ट है इसको बॉडी और शाफ्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो आप रेड रेड देख रहे हैं ये बेसिकली सैक्स हैं, एक चैम्बर्स हैं, जो 1000 ऑफ चैम्बर्स हैं, जो बेसिकली जब ब्लड से ये फिल होते हैं तो उसके बाद बेसिकली इसमें इरेक्शन आती है पेनिस के अंदर। और जो तीसरा पार्ट है उसको हम ग्लैंड्स कहते हैं, और ग्लैंड्स बेसिकली कोन शेप्ड टिप होती है पेनिस की, जो बेसिकली एक्सपेल आउट करती है स्पर्म्स को और यूरिन को। अब अगर सेकंड पार्ट को आप देखें, जो सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो सेकंड पार्ट में प्यूबिक बोन के बिल्कुल बैक साइड पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको बल्बो यूरेथ्रो ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं। बल्बो यूरेथ्रो ग्लैंड्स बेसिकली कॉपर ग्लैंड भी इसको कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो एनाटोमिस्ट था जिसने इसके ऊपर काम किया था तो उसका नाम कॉपर था, दैट्स वाई इसको कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये बल्बो यूरेथ्रो ग्लैंड्स बेसिकली स्लिपरी फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं बिफोर इंटरकोर्स। उसके बाद यहाँ पे ये जो एरिया है इसको आप अगर देखें तो यहाँ पे इस एरिया को, तो ये ब्लेडर है बेसिकली, और ब्लेडर एज यू नो कि फिलअप रहता है फ्लूइड से, और वो फ्लूइड बेसिकली यूरिन होता है, और बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो यूरिनेशन होते हैं। और इस ब्लेडर के साथ बिल्कुल सेमिनल वेसिकल्स हैं,
और सेमिनल वेसिकल्स क्या करती हैं, ये बेसिकली स्टार्च प्रोड्यूस करती हैं, फ्रक्टोज प्रोड्यूस करती हैं। बेसिकली ये जो क्या करता है कि स्पर्म्स को नॉरिश करता है और उनकी बढ़ोतरी में हेल्प आउट करता है, और फिर उनको मोटेलिटी है, जो मूवमेंट होती है स्पर्म्स की, वो बेसिकली इसकी वजह से होती है। फिर उसके बाद निचला एरिया ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, और प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का सबसे जो पहला फंक्शन है वो बेसिकली नॉरिश द स्पर्म्स, जो जरासीम होते हैं, जो जरसूमे होते हैं मेल के, उनको ये नॉरिश करता है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये यूरिनेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद लास्ट पार्ट पे आप आ जाएं। जो लास्ट पार्ट आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इस एरिया को हम स्क्रूटम कहते हैं, और स्क्रूटम जो बेसिकली हैंग्ड आउट, लटके हुए होते हैं पेनिस के नीचे, और ये बेसिकली हाउस ऑफ टेस्टिस भी इसको कहते हैं। और इसका बेसिक जो फंक्शन होता है, ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है स्क्रूटम बेसिकली। और स्क्रूटम के अंदर बेसिकली एपिडाइडमिस भी होता है, सिम्निफेरियस ट्यूब्यूल्स भी होती हैं जो स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर नर्व्स होती हैं, इसके अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं, और ये सारा बेसिकली एक प्रोसेस होता है। तो ये तो हमने डायग्राम इसकी डिस्कस कर ली। अब अगर इसके हम पार्ट्स के ऊपर वन बाय वन करके देखें, तो पार्ट्स में भी सबसे पहले हमारे पास देखें तो रूट आती है। रूट को अगर आप देखें तो रूट अटैचेस विद द एब्डोमेन। जो इसकी रूट होती है वो किसके साथ अटैच है, एब्डोमेन के साथ अटैच है। और सेकंड पार्ट इसका बेसिकली जो है वो हमारे पास बॉडी और शाफ्ट है। तो बॉडी जो इसकी है वो बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप की होती है, और इसके अंदर मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि इसके अंदर थाउजेंड ऑफ चैम्बर्स होते हैं जो कि ब्लड से फिल होते हैं। और जब वो ब्लड से फिल होते हैं तो बेसिकली फिर पेनिस के अंदर एरेक्शन आती है और इसमें रिजिडिटी आती है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास ग्लांस आता है। ग्लांस को हमने जैसे कि डिस्कस किया, कोन शेप्ड है और आउटर पार्ट ऑफ द पेनिस है, और ये बेसिकली ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इसको आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्रूटम आ जाता है। स्क्रूटम का पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पाउच लाइक ऑर्गन है, हैंग डाउन है, टेस्टिस के साथ हैंग डाउन होते हैं, और बेसिकली इनके अंदर टेस्टिस होते हैं और इसको हाउस ऑफ स्पर्म्स कहा जाता है। और स्क्रूटम जो है बेसिकली इसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की पावर होती है। बेसिकली जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो ये बेसिकली स्पर्म्स इनके अंदर जो होते हैं उनको एक नॉर्मल किस्म का टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर उसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलेगा तो डेफिनेटली वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनमें मोटेलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर ये होता है कि जब ये बेसिकली क्लोज़र टू द वार्मथ, यानी कि बेसिकली जब ये बॉडी के क्लोज होते हैं, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो बेसिकली ये बॉडी से क्या गर्माइश हासिल कर रहे होते हैं अपना टेम्परेचर बराबर करने के लिए। और अगर ये बॉडी से दूर हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो फिर उसका क्या फंक्शन होता है, वो बॉडी से बेसिकली कूलनेस हासिल कर रहे होते हैं, टेम्परेचर अपना कूल डाउन करने के लिए। क्योंकि बाहर से टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जब टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो वो बॉडी से बेसिकली कूलनेस हासिल करते हैं। तो ये बेसिकली स्क्रूटम का मेन फंक्शन है। अब स्क्रूटम के बाद हम आए तो हमारे पास टेस्टिस आ जाता है। टेस्टिस जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि ऑलिव शेप्ड है, 2 होते हैं, और जो टेस्टिस बेसिकली प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन्स। टेस्टिस जो है बेसिकली क्या करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये टेस्टोस्टेरॉन्स क्या चीज़ हैं, ये बेसिकली मेल सेक्स हार्मोन हैं जो मेल को फीमेल से डिफरेंट करते हैं। जैसे फीमेल है उसमें एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, तो इस तरह मेल है उसमें टेस्टोस्टेरॉन्स प्रोड्यूस होंगे, जिसमें मूँछों का आना, इसके अलावा आवाज़ का भारीपन होना, सेक्सुअल करैक्टर्स का डेवलप होना, ये सारे जो है ना बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन्स का फंक्शन है। उसके बाद इसके अंदर सिम्निफेरियस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और ये जो सिम्निफेरियस ट्यूब्यूल्स होती हैं ये बेसिकली क्या होती हैं जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। जो सिम्निफेरियस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के अंदर होती हैं, ये क्या करती हैं कि ये स्पर्म्स के रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूस करने की, यानी कि ये एक मशीन है, यूँ समझ लें कि जो स्पर्म्स को कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करती रहती है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है एपिडेडमस से आ जाता है। एपिडेडमस एक लॉन्ग ट्यूब है बेसिकली जो टेस्टिस की बैक साइड पे होती है, और एपिडेडमस क्या करती है, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करती है
और उनको स्टोर करती है। यानी कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन का काम इसका होता है और दूसरा ये स्टोर करने का काम इसका होता है। फिर उसके बाद वैस डिफरेंस हमारे पास आता है। वैस डिफरेंस को अगर आप देखें तो बिल्कुल जो ब्लेडर है उसके साथ लोकेटेड होता है और ये बेसिकली लॉन्ग ट्यूब होती है और इसका काम जो है मैच्योर जो सेल्स हैं, जो मैच्योर स्पर्म्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है। उसके बाद हमारे पास एजैकुलेटरी डक्ट आ जाती हैं। एजैकुलेटरी डक्ट बेसिकली क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करती हैं, ट्रैवल करने में हेल्प आउट करती हैं और लास्ट में जो सीमेंस होता है, जो स्पर्म होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एजैकुलेट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद यूरिथ्रा आता है। यूरिथ्रा एज यू नो लॉन्ग ट्यूब है जो ब्लेडर के साथ कनेक्ट है और फिर ये पेनिस से होती हुई आखिर ग्लैंड्स में आके जाके ख़त्म होती है। और इसका जो बेसिक फंक्शन है यूरिथ्रा का, ये दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन तो ये है कि यूरिनेशन के वक्त इसने क्या करना है, यूरिन को लेके आना है और सीमेंस को क्या कर देना, ब्लॉक कर देना है। और इसी तरह जब सीमेंस की बारी होगी, सीमेंस ने निकलना है तो सीमेंस निकलेगा और स्पर्म्स निकलेंगे, लेकिन जो बेसिकली यूरिन होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेमिनल वेजिकल्स आ जाते हैं। सेमिनल वेजिकल्स बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ बिल्कुल ब्लेडर के बैक साइड पे ये वेजिकल्स हैं, सेमिनल वेजिकल्स इसको हम कहते हैं। और जो सेमिनल वेजिकल्स हैं ये क्या करती हैं, स्टार्च प्रोड्यूस करते हैं, फ्रक्टोज प्रोड्यूस करते हैं और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एनर्जी देते हैं, स्पर्म को नॉरिश करते हैं और उनको एनर्जी देते हैं। और जिसकी वजह से जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोबिलिटी के काबिल होते हैं। और अगर स्पर्म मोबाइल नहीं होंगे, उनमें मोबिलिटी नहीं होगी, तो वो प्रेगनेंसी के काबिल नहीं होंगे। स्लगिश होंगे तो वो प्रेगनेंसी नहीं कर सकेंगे। तो दैट्स वाई इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेसिकली अगर देखा जाए सेमिनल वेजिकल्स का। तो ये तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब इसमें एक दफ़ा फिर हम इसको देख लेते हैं कि इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं, जो ज़रूरी हैं डिस्कस करने, जिनके फंक्शंस बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने डिस्कस किया था बल्बो यूरिथ्रो ग्लैंड, हमने डिस्कस किया था। तो बल्बो यूरिथ्रो ग्लैंड बेसिकली क्या करता है, ये स्लिपरी फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। बेसिकली मेल और फीमेल में दोनों होता है। बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स में आमादगी ज़ाहिर करने के लिए ये बल्बो यूरिथ्रो ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये स्लिपरी फ्लूइड खारिज करते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास सेमिनल वेजिकल्स आ जाते हैं। सेमिनल वेजिकल का हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि सेमिनल वेजिकल्स क्या होते हैं। ये बेसिकली स्टार्च प्रोड्यूस करते हैं, फ्रक्टोज प्रोड्यूस करते हैं, जो बेसिकली स्पर्म्स को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं और उनमें मोबिलिटी वगैरह पैदा करते हैं। फिर उसके बाद नीचे हमने देखा कि बिल्कुल ब्लेडर के नीचे करके यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला फंक्शन इसका बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड का यूरिनेशन को कंट्रोल करना है और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका जो है वो बेसिकली क्या है, स्पर्म्स को नॉरिश करना है। फिर उसके बाद अगर आप आ जाएं स्क्रूटम के ऊपर, तो स्क्रूटम का मेन फंक्शन हम यही कह सकते हैं कि ये हाउस ऑफ टेस्टिस है और ये बेसिकली क्या करते हैं, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करते हैं। और इनके अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं और सिम्निफेरियस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और सिम्निफेरियस ट्यूब्यूल्स जो है वो क्या क्या करती हैं, सिम्निफेरियस ट्यूब्यूल्स जो है ना बेसिकली स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद मज़ीद अगर इसमें देखा जाए तो एपिडाइडमस है। एपिडाइडमस बेसिकली स्पर्म प्रोड्यूस करता है और स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करता है। तो ये मेन चीज़ें सारी इसमें हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस लेक्चर की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।